So students, will start next topic, oxygen dissociation curve. What do you mean by term oxygen dissociation curve? It means saturation of hemoglobin with oxygen at different partial pressure of oxygen. So let me write definition. Oxygen dissociation curve of hemoglobin. It is a graph representing with oxygen at different partial pressure of oxygen. It means saturation of hemoglobin with oxygen at different, मतलब तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो गया, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का saturation of ऑक्सी हेमोग्लोबिन with मतलब at saturation of ऑक्सी हेमोग्लोबिन at different partial pressure of ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या कितना परसेंट सैचुरेशन है different partial pressure of oxygen. Okay, let me draw a graph. This is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, now what will be, it is a saturation of hemoglobin. It means we can write oxyhemoglobin. Okay, and this is partial pressure of oxygen in. Okay, this is saturation, SAT, percent saturation of oxyhemoglobin, of hemoglobin. Now let us consider if we take 20. So 20, it will be this, and let's take 40. It will be saturated at 75. Next, suppose we take 95. Suppose here it is 95. And it is saturated at 97. What we will see, the graph will be this graph we will see. Okay, so we can say at 20, what it will be, oxyhemoglobin 30%.
40 में कितना था? 75%. Saturation is 75%. And at 95, when partial pressure of oxygen is 95, then what was the percentage saturation? Partial pressure of oxygen जब 95 था, it was 97. So what you can observe, it is a sigmoid graph. Increase हो रहा है, after that यहाँ पे देखो ये ऐसे constant हो गया. So it's a sigmoid graph. Sigmoid curve. Okay, now why we have taken this value? Because we have studied that I think at present, okay, we have studied the exchange of gases. We have studied this. Okay, suppose the partial pressure is here 40. Okay, now it will यहाँ alveol में गया. Then oxygen was, partial pressure will become 95. So at 40 it is 95. So here saturation is 97%. Okay, and in this case here we have studied now. Suppose here it is what, 20. The oxygenated blood comes here. It is used up. Now it will be 40. It is deoxygenated blood. It is a venous blood. So that's why we have taken this value. Okay, 40 and 95. And one thing more, suppose 100 ml of blood, suppose करो 100 ml of blood carry 15 gram of hemoglobin, then how many oxygen will be transported? 19.8 ml of oxygen is transported. And in this case, जब यहाँ पे one thing more, मैंने बोला ना partial pressure is here 40. It is deoxygenated blood. The saturation will be here is how much? 75%. And here hemoglobin saturation is at 97%. That's why we have taken. See student, यहाँ 95 है और partial pressure of oxygen 95, तो hemoglobin saturation is 97%. यहाँ 40 है तो यहाँ पे hemoglobin saturation is 75% यहाँ.
and in venous blood, here what will be the oxygen? 100 ml of blood, where you can say venous blood, deoxygenated blood. Okay, blood still has 14.8 ग्राम हेमोग्लोबिन हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा? They will still carry oxygen. Just tell me how much oxygen they will carry. Simple, same वही होगा. Okay. तो वन थिंग मोर आई एम टेलिंग अगेन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट. तो यहाँ पे एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, mm ऑफ मरकरी. इट इज़ ऑक्सी हेमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. 20 में क्या था? एट 20 इट वॉज 30%. 40 में क्या था? ये देखो 40 में 75%. दैट्स वाई हैव टेकन 70 हेयर. 40 क्यों लिया? यहाँ पे है शो करने के लिए. एंड देन वी हैव टेकन 95. 95 क्या है? 95 में कितना था? इट वॉज 97% saturation. Okay, next is what we will study, factors affecting. Okay, and this I have told you 100 ml of blood कितना कैरी करते? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन. तो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा? 19.8. नाउ फैक्टर अफेक्टेड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन curve. So if CO2 concentration increases, so with increase, अगर ये increase होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टर्न्स टूवर्ड्स राइट. ये राइट है. ओके, विथ इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, increase in partial pressure of carbon dioxide, oxygen dissociation curve, what will happen? Turns towards right. And this is known as, and this time this is known as Bohr's effect. तो व्हाट हैपन इन दिस केस? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट्स हो जाएगा. तो दिस कंडीशन इज नोन एज बोर इफेक्ट. ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है, व्हाट विल हैपन? इट विल डिसोसिएट्स एंड इट इज नोन एज बोर्स इफेक्ट. Second, temperature. So temperature increase, कर्व्स किधर राइट होगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टर्न्स अगेन राइट. पीएच, पीएच मतलब जब पीएच एसिडिक होगा, एसिडिक पीएच मीन्स पीएच इज लेस.
at acidic pH, what will happen? Curve bends right. In all the cases the curves bend right. यहाँ पे एसिडिक है मीन्स जो pH है इट इज़ डिक्रीजिंग. इफ इंक्रीज की बात नहीं हो रही. एसिडिक मीन्स व्हाट? मीन्स pH इज डिक्रीज लेस देन 7. कर्व बेंड्स राइट. टेम्परेचर में भी राइट हो जाएगा. एंड व्हेन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 what happened also turns right and ऑक्सी होमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा जिसको हम लोग बोर्स इफेक्ट कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व.